you find that they were more conceptual? They were more conceptual rather than calculation. मैथ्स वगैरह में, साइंस में कहीं कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ी? मैथ्स में तो देखो थोड़ा बहुत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे साइंस वगैरह है, डोंट यू फील दैट दे वर मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रादर देन जस्ट प्लेन कैलकुलेशन की जी इतना मास है, इतना वॉल्यूम है, तो इतना ये निकालना है, ये व्हाटएवर. So all the rest of the exams now which you are going to face, they will be conceptual type. Okay? आप लोग 9th में हो, and I believe according to Pankaj sir, he has complimented that this batch is very good in maths. So first and foremost, you must prepare for RMO, Regional Mathematics Olympiad. This is the only Olympiad जिसमें एक ही पेपर आता है, and children are allowed to sit from 8 to 12, and they sit for the same paper. Okay? And because इसमें क्या है, I'll tell you. First I'll tell you the stages. It consists of first RMO. This is Regional Mathematics Olympiad. Clear that you go for INMO, Indian Mathematical Olympiad. If you clear that, you go for IMO, International Mathematical Olympiad. Biggest advantage in Mathematics Olympiad is that they encourage as young a student as possible. Now, supposing you clear RMO in 9th standard or 10, अब तो नहीं होगा because now the date is gone, but you can sit for 10. If you clear RMO in 10th standard, you will be selected for a camp in INMO. Okay? Now you will be competing with students of 11th also, 12th also, maybe even 8th also, 9th also, whatever. Supposing you don't make it into the final, excuse me. Supposing you don't make it, alright? You, in 10th, like you selected for INMO, but you don't make it into the final team which goes to INMO. But you will be there, you will be in their, what do you call, INMO student, and you will be invited for the camp every year. And the whole year you will be sent material for training. So you will have an edge over those students who will be sitting for the first time. Okay? So 11th, you will be invited directly for this stage. See, you sat in 10th for RMO. You made it till INMO, but you did not make it to IMO. So when you are in 11th, you will be invited to write this paper directly. Do you understand the advantage? Then supposing in 11th also you don't make for IMO. In 12th again you will be invited for this stage directly. Do you understand the advantage? Plus, if you are supposing in 10th you don't make it for the final stage, the whole year you will be sent papers, booklets, assignments, training will be given so that you have an advantage in INMO. That is why. Now, what is the course, the syllabus for maths? The syllabus basically, अभी आप लोगों ने how much have you finished? Almost 10th का syllabus किया है अभी? 10th का कर लिया? 9th में? Almost, very good. Calculus लिखा है थोड़ा सा? Physics में you are doing calculus? Physics में calculus कर रहे हो? All right. इसमें जो है first thing to remember is कि calculus will not be part of the syllabus because calculus is considered to be the calculator of maths. All right. So calculus is not a part, but algebra is a very big part. 40%. Geometry
Rigo will be approximately 20%. Number theory will be another 30%, and 10% will be rest of the maths, but calculus will not be a part. This syllabus is different from the IIT syllabus. I think all of you are going to sit for IIT. You are going to prepare. या इसमें से कोई bio वाले भी हैं? Bio वाला है कोई? Who would like to go for bio when I mean in 11? और कोई कॉमर्स और या आर्ट साइड वाला तो नहीं है ना? Yeah. So this syllabus is actually different from the IIT syllabus. But अभी से आप थोड़ा सा concentrate करो. I think you will stand a very good chance of at least making it till. Yeah. Now, number of students. See, RMO, what they try and do is, they have divided into approximately 5-6 zones, regions. And from each region, they try and pick up at least 15 students. Alright? 15 to 20 students. So in INMO, they have anywhere from 60 to 75 students. Now RMO in Delhi. In Delhi, they were approximately 3,000 students, out of which they chose approximately 30 students for the INMO. That is only from Delhi region. Out of 3,000 students, they chose approximately 30 students for the INMO. Okay? So it's a good ratio, and they choose the total students is much more here. Finally, then they choose after this thing they have a camp. In the camp they have around 75 students. They have more students here in IIM. Now, which other exams would you like to talk about? Which other exams? GSTSE is when? 31st Jan. 31st Jan. And 9th level students are allowed to sit for it? Only 9. See, GSTSE is pattern on NTSC pattern. Alright? जो आपका NTSC pattern, the NTSC is still 8th standard. GSTSE will be for 10th standard. This is conducted by NCERT. It is specifically for Delhi region only. Okay? And the syllabus will be of 10th standard. And in this again you will have physics, chemistry, maths and bio. Maths thoda there will be I think 2 or 3 questions आ ही जाते हैं maths के. And like NTSC वगैरह में आपने 20 questions आए थे. I think there were 20 questions here also. But bio will be a very strong component of GSTSE. कितने लोगों ने करा है? Practically all of you. Why? आप लोगों ने नहीं करा? वो तो स्कूल वालों ने करवाया होगा आप लोगों से? इसमें भी बेटा it will be जो बायो के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली बायो के मैं बता रही हूँ, आपके जो एंड का जो चैप्टर है ना, हैबिटेट वाला, स्पीशीज वाला, एवोल्यूशन वाला, और वो जो एक एंड में चैप्टर है जिसमें आपका वो
सिक्योरिटी एंड में जिसमें आपका एनवायरमेंट वो रिड्यूस एंड ऑल दैट और वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह उसका जो है there will be lot of conceptual questions based on those chapters. Number 1. Number 2, physics again 10th standard की तो होगी ही होगी. अच्छा सिर्फ 10th ही नहीं उसमें 9th का भी सिलेबस पूछेंगे. This is something you have to take care. They will ask 9 and 10. All right. और ऐसी केमिस्ट्री में आपका and please revise all your old books 7th and 8th की भी 7th and 8th की भी books revise करना NCERT. Alright, and I'll tell you why. Bio में कहाँ तक पहुँचे हो? 10th का सिलेबस अभी नहीं टच किया है. Alright, 9th and 10th में डेंटिशन नहीं पढ़ाया. And yet आप लोगों को डेंटिशन पढ़ाया गया है. कब पढ़ाया गया है? डेंटिशन पता है क्या होता है? Teeth के बारे में. The kind of teeth a human being would have. What? How many kinds of teeth does a human being have? Alright. ये आपको पढ़ाया गया है? कब पढ़ाया? 7th में, right? उसके बाद ना 8th में पढ़ाया, ना 9th में पढ़ाया, ना 10th में पढ़ाया. And supposing there is a question on dentition, what will you say? Please take a pen out of your mouth. It's disturbing me. I mean, don't chew anything. So, आपको ये लगेगा कि ये question कहाँ से आया? Now you understand why I'm asking you to revise your books? Plant की viral diseases कौन से year में पढ़ी थी आपने? 3 diseases थी viral और 3 bacterial थी शायद. Okay, ये this is the trick of passing any exam. It's not that कि आपने जो है 9th की 9th का कोर्स सिलेबस कहा था हमने 9th पढ़ लिया, 10th का कहा था 10th पढ़ लिया, लेकिन बेटा what about the 7th and 8th which you've already done? Supposing अब वो पूछ लेंगे कि वो tobacco rust या wheat rust is it a bacterial or a viral disease? And then you say ये question का और कोर्स था. आपको एक फ्रूट बैटरी बनाने सिखाई थी. लेमन के पीस कट करके, पोटैटो के पीस कट करके उसमें एक वायर लगा. किस कौन सी क्लास में? केमिस्ट्री के चैप्टर में है. Anybody can tell me? 8th में है. ठीक है? If you cut 2 pieces और उसमें जो है depending on the electronegativity of the 2 fruits you can actually pass the current. आप एक end एक fruit पे रखो, दूसरा end दूसरे fruit पे रखो. Alright बेटा? So you when you sit for these exams, please make sure आप जो है 6th, 7th, 8th, 9th and 10th की books पढ़ेंगे. And only NCERT book पढ़ना. है? NCERT पढ़ लो बेटा. अब अगर NCERT आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, believe me, you will cross the first stage. Okay? NCERT books. All right. अब ये JSTSE का आपका next year होगा जैन में. Now let us go ahead. जब आप लोग 10th पास कर लोगे, उसके बाद और क्या-क्या आप एग्जाम्स दे सकते हैं. One more. हम ग्रुप मैथमेटिक्स ओलंपियाड. ग्रुप मैथमेटिक्स आप कौन से स्कूल में हो? हम बसवा इंटरनेशनल. तो वो ग्रुप मैथमेटिक्स ओलंपियाड नहीं बेटा, यू आर सिटिंग फॉर द RMO. ग्रुप मैथमेटिक्स ओलंपियाड कौन सा है? हम RMO जो हो गया. RMO तो हो गया, वही हम कह रहे हैं, वो तो नवंबर में हो गया था. हाँ, अब नाउ नेक्स्ट नवंबर यू विल बी एबल टू सिट फॉर RMO. ओके? और RMO में आप में से कोई केवी वाला है? केंद्रीय विद्यालय? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का अलग ग्रुप होता है एंड प्राइवेट स्कूल्स का अलग ग्रुप होता है. सो केवी पीपल दे उनके जैसे मैंने कहा ना RMO में रीजन्स में सिलेक्शन होता है. मतलब तो एक रीजन बना रखा है उन्होंने केवी ग्रुप, मतलब केवी स्कूल्स का रीजन. दिस नो ग्रुप मैथमेटिकल दिस ओनली रीजनल मैथमेटिकल. और अब वो हो चुका है
Now you will be able to sit in November 2012. Alright beta, the minute you cross your 10th board, then begins your life for competitive exams. First and foremost of that will be your KVPY. कौन बोला KVPY? I think सुन के चढ़ गए हो गए। कौन बोला? अभी से ही everybody is motivating you for KVPY? Yeah. अच्छा, what is KVPY? प्रोत्साहन। What is प्रोत्साहन? Motivation. Encouragement or motivation, ठीक है? So this is basically only for science students to promote science. It is basically to promote science education and to promote research. ये 11 से शुरू होता है and you can sit for it in 11th, 12th, your BTech also, BTech के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में बैठ सकते हो और BSc फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. Okay? No, but don't. I will not encourage you to go for BTech first or second year, and I'll tell you why. 11th and 12th का जो एग्जाम है, it is like one MCQ paper and an interview. BTech और BSc में जो है competition, that is for a project. It has to be an original working project in soft copy and hard copy. अब वो बनाना बेटा वाकई में मुश्किल होता है because how, you think of something and you do it and then they say this is not original. You understand? So it is better to clear an MCQ paper. एक MCQ paper आता है and the interview stage, which is easier to clear than doing all those project work. So I will not suggest to go for or wait for BTech. Go for it in 11th only. दूसरा क्या है बेटे? 12th में ये condition रखते हैं that only those students who clear the theory paper, only those students will be invited for interview who give a written undertaking that they will be joining pure sciences, who will not join BTech or oblique MBBS, who will go either for integrated MSCs or BSc physics or chemistry or maths or whatever. Okay? 11th में क्या है? If you clear the written paper and you clear the interview, whether you go later on for BTech or whatever you do, you will, if you clear the interview, you will still be awarded the fellowship. इसलिए I always tell everybody, please ये वाला exam give in 11th standard. At least you will be awarded the fellowship. 12th में condition है कि अगर आप science लेंगे तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. You understand what I'm trying to say? Difference समझ में आ रहा है कि join pure sciences और BTech में फर्क समझ में आ रहा है? Okay? So go for it in 11th standard. अच्छा, इसके papers जो हैं बेटा नेट पे अवेलेबल हैं. If you type KVPY in Google, साइट आती है ऑफिशियल साइट kvpy.org.in or something like that, and the past 2 years के papers अवेलेबल हैं. और इसका स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा इन्होंने टफ कर दिया है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11th एंड 12th का आता है, MCQ आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और 11th में जो है पूरे चारों सब्जेक्ट्स आते हैं. क्योंकि आप 10th पास करके आए हो. नहीं, बायो 12th का नहीं आता है. अगेन बायो में जो क्वेश्चंस आएंगे वो वही लास्ट के 3 चैप्टर्स के आते हैं. Nobody is bothered about life processes. 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको डाइजेशन, respiration, circulation, all those sort of things पढ़ा. No, there are very few questions about that. Mostly आता है वही diversity of life जो आप 9th में पढ़ रहे हैं.
and about the environment, going the food pyramid, food chain, and interdependence of the species, evolution of the species. Okay? Genetic drifts वगैरह ये भी आप 10th में पढ़ोगे. तो basic it is all conceptual questions. और चारों सब्जेक्ट्स के आते हैं. 12th में क्या होता है? पेपर आएगा एक ही पेपर. उसमें आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल बी physics and chemistry will be common, and then there will be section like there will be 3 sections. So physics and chemistry will be in one section, maths will be in one section, bio will be in one section, and out of these 3 sections you have to attempt 2 sections. Whichever we find easy, whatever we find easy, or we have to learn. It depends on which stream you have taken, because normally students would take bio stream, they give up maths, and students would take up math stream, they give up bio. Yeah, but if we take PCFE, so Well, then you will be there at what? You can then pick and choose कि math easy लग रहा है math करो, bio में लग रहा है bio तो bio करो, okay? And those people will really have an advantage. जो लोग PCM with B लेते हैं, they do have an advantage. तो उसमें 12th वाले पेपर में you can pick and choose between maths and bio, but not in 11th का paper. There will be one paper. Sections will be 4, and all 4 sections have to be attempted. बेटे अब इसका जो है last year what I heard was like more than 1 lakh students sat for this exam, and out of that approximately about 300 scholarships were awarded. So the average comes out, let us say, and out of that about 300 scholarships were finally awarded, and this is only 11th, not 12th, not BTech, not BSc. अच्छा, इसका आपको पता है कि एडवांटेज क्या है? What are the monetary advantages and all which you have? क्या आप कितनी स्कॉलरशिप? हाँ जी, आपको तो बताया होगा. हाँ, नहीं बताया. कितना पैसा मिलेगा? All right. The monetary advantages beta, you get 4,000 rupees per month. Per month. Per month. Till Now, अब ऐसा लग रहा है कान खुल रहे हैं हमें. अभी तक जो था कि कोई That's fine, huh? Not only that, beta, you actually get paid for 16 months in a year. How? Okay, you got 12 months, correct? So 12 months का quarter कितने हो गए? 3 महीने का quarter हुआ, right? So you get paid for 4,000 into 12 plus you get paid by another quarter. 16. 48 हुआ ना बेटा? 16 months. Plus you get paid for another 4 months. So that comes to 48. Plus 16,000 extra is given every year for contingency funds. You're supposed to buy books in it. You're supposed to attend the summer camps in it. You're supposed to attend the summer workshops or whatever. So in effect, you get paid 48 plus 16 per year. And you have, break देने का मन है? अच्छा, एक चीज बताओ, NCSE आप लोगों ने seriously नहीं दिया था? no ma'am. Why? Yes? Ma'am, we were not mature. SST bio की वजह से? इसमें आपका SST तो नहीं है, but bio तो होगा. No problem है. SST नहीं पढ़ेंगे. Then the other advantage is बेटा, इसमें क्या होता
होता है, देयर आर 2 मीटिंग्स, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं. एक होता है ASC, दिस इज एशियन साइंस कैंप, और एक होता है बेटा लिंडो मीटिंग्स. किसी ने सुना है लिंडो मीटिंग्स के बारे में? क्योंकि एशियन साइंस कैंप तो बहुत नई चीज है, दिस इज हार्डली 4-5 years old. But Lindo meetings have been taking place since 1950. 50 साल से they have been occurring. Anybody heard about them? All right. First, I'll go for Lindo meeting. Lindo meeting has been taking place since 1950. Every year in Lindo, in Germany, they invite Nobel laureates, and every year they have a thematic meeting. मीन्स कि एक साल केमिस्ट्री पे थीम होगा तो वो केमिस्ट्री के नोबेल लॉरेट्स को इनवाइट करेंगे. नेक्स्ट ईयर फिजियोलॉजी का थीम होगा तो दे विल इनवाइट फ्रॉम मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी. नेक्स्ट ईयर विल बी फिजिक्स एंड दे विल इनवाइट नोबेल लॉरेट्स फ्रॉम फिजिक्स. एंड दे चूज अप्रॉक्सिमेटली 600 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियन कंटिंजेंट कंसिस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स. एवरी ईयर इंडिया हैज बीन सेंडिंग 20 students for these meetings, Lindo meetings. You heard about them? No? अब जो the eligibility is that the student has to be in second year of graduate program. तो जब वो पूछते हैं आप लोगों से, so they prefer students holding a KVPY degree or you know an NGSC scholarship or a JSTSC या कोई Olympiad clear करा है. फिर 20 students उनको select करने हैं, obviously you know they have this pool to select from. So this is again a very big advantage that if you can clear this, आपको Lindo meetings वगैरह में selection can be easier. इसी पैटर्न पे Lindo meetings की पैटर्न पे 5 साल पहले they started the Asian Science Camp, in which they invite students only from Asian countries. And इसमें इंडिया का contingent is about 29-30 students का contingent जाता है. And only Asian countries send it, and again they call Nobel laureates from different. But they don't limit the Nobel laureates only from Asian countries, because अगर वो करेंगे तो Nobel laureate नहीं मिलेगा उन्हें कोई. So Nobel laureates, so they call from everywhere, but the students they take only from the Asian countries. Again, they prefer sending every year. They prefer sending the KVPY students. और ASC में जो students भेजते हैं वो they can send even 11-12 students. और BSc वगैरह के BTech के भी भेजते हैं. जैसे Lindo तो वो भेजते हैं second year of graduation. लेकिन ASC you can get selected, जैसे आपने 11th में KVPY clear कर लिया, you may be selected for ASC also. Okay? और ये दोनों meetings जो है Department of Science and Technology से होती है. जो selection process होता है वो Department of Science and Technology से. So this is in Germany. और ये तो पक्का Lindo में ही होगा. The city is Lindo. It takes place every year in Lindo, Germany. ये अलग-अलग एशियन कंट्रीज, लास्ट ईयर जैसे मुंबई में हुआ था, इस साल कोरिया में हुआ, उससे पहले जापान, so different एशियन कंट्रीज में. Okay? Then you come to your Olympiads. वो तो नाम सुने होंगे सारे, ठीक है? अब ये बताओ ओलंपियाड में बैठने का कितने लोगों का मूड है? Why did you start from next year? आपको पता है आप बैठ सकते हो नेक्स्ट ईयर से? क्या? हाँ? कौन से वाले में? बेटा आप लोगों को मैं अभी से एक चीज बहुत क्लियर कर रही हूँ, which I hope you all remember. किसी भी ओलंपियाड में लोअर एज लिमिट नहीं है, इवन इफ दे राइट ऑन द फॉर्म. हर ओलंपियाड में अपर एज लिमिट है. प्लीज मेक दिस क्लियर. इस साल बहुत कंफ्यूजन हुआ था, बहुत लोग बच्चे नहीं कर पाए थे. रिमेंबर देयर इज नो लोअर एज लिमिट इन एनी ओलंपियाड, बट एवरी ओलंपियाड हैज एन अपर एज लिमिट. क्लियर? अब आपके साइंस